में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीए 4th सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए है। इसके मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। इस तरह से 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस ये भी आपके 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और इस तरह से हर एक यूनिट में से आपने हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और कोई एक का आपने आंसर देना होगा। मीन्स के इंटरनल चॉइस दी जाएगी। पूरे सिलेबस को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में ही है और बाकी 4 यूनिट बचते हैं। उसमें से हर एक यूनिट में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं। सिलेबस के लिए आप अलग से वीडियो देख लेना, आने वाले समय में वो डाल दिया जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से हैं। सबसे पहले है एक्सप्लेन सिस्टोलिक प्रेशर एंड नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म tetanus, and then describe blood clotting, and list 2 Arjuna awardees of tennis, and next write about vital capacity, and next explain functional disability. स्टूडेंट्स, बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो। ये आपके सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। बाकी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ के आपने पहले ही देखे होंगे क्वेश्चंस। उसमें से ये गैस कितना सही रहा ये आप ही बता सकते हो। मैंने ये देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये पूरे सिलेबस में से निकाल के बनाए जाते हैं और ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए है। इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन निकल आते हैं, कोई भी पॉइंट उसका पूछा जा सकता है, तो वहाँ से भी आप अपने पेपर की तैयारी ये कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लंग्स एंड देन व्हाट इज प्लाज्मा, एंड नेक्स्ट इज राइट अबाउट द मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ एड्स, and next is write the uses of Hatha Yoga, and then explain the meaning of digestive system, and next is write down the names of blood vessels, and next is what is blood clotting, and then explain the aim of yoga, and next is what is RICE, and next write down the names of blood vessels। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑफ एड्स, एंड नेक्स्ट डिफाइन द टर्म स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, एंड नेक्स्ट इज डिफाइन योगा, एंड देन राइट डाउन द नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड फॉर टेनिस, एंड देन डिफाइन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज नेम 2 organs of digestive system, and then what do you mean by cardiac cycle, and next is name different blood groups, and then explain this location of joint, यहाँ explain the location of joint लिखना था, and next is describe the mechanism of digestive system, and then name the organ of blood circulatory system, and next is list the common injuries during play, and then how many sets are there in lawn tennis for women and men। ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये यूनिट सेकंड से स्टार्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड देन इज डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चंस मोल्ड करके डाले गए हैं। कई क्वेश्चंस का आंसर सेम है,
लेकिन उसको मोल्ड करके यहाँ डाला गया ताकि आपको पता चल सके पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो मोल्ड किए जा सकते हैं, उसको आप समझ सको। नेक्स्ट है एक्सप्लेन mechanism and neural control of respiratory system, and then meaning of respiration, types of respiration, and write the organs of respiratory system in detail, and then write the chief organs of digestive system and functions of digestive system, and then what is the respiration system, write about its organs। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम शोइंग द लेबल, and then write about the organs of digestive system with neat diagram। And next is explain the mechanism of digestive system, and then explain the effect of exercise on the digestive system। ये यूनिट सेकंड था। अब यूनिट थर्ड के क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द टर्म कार्डिक साइकिल along with its types of circulation, and then is write about the various blood groups along with its importance, and then what are the types of blood circulation, explain the types and their importance of blood, and then what do you mean by circulatory system, explain the types of blood vessels, and then what is hemoglobin, what are the functions of white blood cells and red blood cells, and then write the structures and functions of heart, and next explain the structure and functions of blood, and then explain the meaning, functions and composition of blood, and then describe circulatory system with the help of diagram, and then what is blood, describe its function, describe circulatory system in detail, and then यूनिट फोर्थ जिसमें है ड्रॉ द लेआउट ऑफ टेनिस कोर्ट अलॉन्ग विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फील्ड, and then draw a neat and clean diagram of tennis court and label it, and then write the 4 basic fundamentals and 4 major tournaments of tennis game, draw a labeled diagram of tennis court, and then draw tennis court and write its rules, and then what do you know about the meaning, aims and types of yoga, explain any two, and then write the meaning and types of yoga in detail, and then briefly explain the principles of yoga and highlight the importance of any two asanas, and next is write in detail the modes of transmission and preventive measures of hepatitis A and B, and then what is AIDS, describe its modes of transmission and methods of prevention, and then what is AIDS, write its types, causes, symptoms and remedial measures, and then write about fractures and their symptoms and remedial measures, explain communicable diseases, their modes of transmission and methods of prevention। ये अलग से क्वेश्चन है इसका। एंड देन यूनिट फिफ्थ, इसमें ये क्वेश्चंस इस तरह से हैं। Elucidate the term disability, highlight various problems faced by disabled, and then define disability, what are the various factors causing disability, and then write the causes and preventive measures by disability, and then what do you mean by fracture, discuss its types, causes and treatment, and then explain the causes, preventive measures and treatment of sprain and dislocation, and next is what are sprain and strain, explain their causes, preventive and remedial measures, and then explain causes of sports injuries and their preventions, explain the meaning and scope of rehabilitation, and last question is what do you mean by sprain, write its types, causes, symptoms and remedial measures। ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस के नोट्स प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से इसकी तैयारी करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसे लगे, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।